students, this is Ipshita Gangopadhyay, teacher from Trinity International School. Students, today we will start with a new chapter number 13, linear equations in one variable. So here you first need to know what is equation, then linear equation, then one variable. Okay, so these words you have to know the meaning, then only you will be able to go through the chapter. Now in your textbook on page number 131 you have the definition of equation. An equation is a mathematical statement which shows the equality of two expressions. Okay, so an equation is a mathematical statement which shows the equality of two expressions. An equation always has a equality sign and the expression on left hand side equals the expression on right hand side. So if you look to this example, अब आपको example दिखाई दे रहा है यहाँ पर 2x minus 4 is equal to x plus 2. तो आप देख सक रहे हैं कि यहाँ पर दो टर्म्स लिखे हुए हैं, बीच में इक्वल टू है और यहाँ पर दूसरा दो टर्म्स लिखे हुए हैं. ओके, सो यहाँ पर देखिए इक्वेशन इज ए मैथमेटिकल स्टेटमेंट विच शोज द इक्वालिटी ऑफ टू एक्सप्रेशंस. सो यू कैन सी टू एक्सप्रेशन, ये एक एक्सप्रेशन है इक्वल टू के इक्वल टू and then another equation. Okay, so as you can see यहाँ पर दो एक्सप्रेशन आपको दिखाई दे रहे हैं. अब ये जो इक्वल टू है इसके, ये जो 2x माइनस 4 है ये इक्वल टू के लेफ्ट हैंड साइड का इक्वेशन है. सिंस इट इज टू आवर लेफ्ट हैंड साइड, ये हमारे लेफ्ट हैंड साइड में है, तो this is what they are saying, that left hand side expression. So 2x minus 4 is left hand side expression and x plus 2 is right hand side expression. तो आप देख पा रहे हो, तो इक्वेशन में कैसे होता है, इक्वेशन में इक्वल टू बीच में होता है और लेफ्ट साइड में एक एक्सप्रेशन होता है, राइट साइड में एक्सप्रेशन होता है. ठीक है, तो यहाँ पर भी आप देख सकते हो, यहाँ पर भी लेफ्ट हैंड साइड में एक एक्सप्रेशन है एंड इक्वल टू के राइट हैंड साइड भी एक एक्सप्रेशन है. कैन यू सी दिस? ओके, सो दिस इज व्हाट इज नोन एज इक्वेशन which have two expression and one on the left hand side of your equal sign and another one is on your right hand side. Okay, so this is the meaning of equation. Now we will know what is linear equation. Now what do you mean by linear equation? So linear equation is an equation which consists of variables or literals with highest power 1. For example, अब देख पा रहे हो यहाँ पर जो example दिया हुआ है ये भी आपके equation है, क्योंकि बीच में आपका इक्वल टू है और इक्वल टू के लेफ्ट हैंड साइड भी एक्सप्रेशन है और राइट हैंड साइड भी एक्सप्रेशन है ना. एंड व्हाट यू कैन ऑब्जर्व इज हियर वॉट एवर वेरिएबल्स आर देयर, यहाँ पे आपको वेरिएबल्स दिखाई दे रहे हैं एक्स और वाई दिखाई दे रहे हैं. इसके ऊपर के जो पावर्स है ये पावर्स ओनली इट इज 1. Okay, power is only 1. So here also another example is given. यहाँ भी आपको वेरिएबल x दिखाई दे रहा है बट इसका पावर क्या है, 1 है. So it is a linear equation. Here also you can see that the power of the variables are 1. So this is called a linear equation. So a linear equation with only one variable is called a equation in one variable. Now if you observe these expressions, यहाँ पर देखिए इक्वल टू के लेफ्ट हैंड साइड भी एक्सप्रेशन है, राइट हैंड साइड भी एक्सप्रेशन है. दैट मीन्स दिस इज एन इक्वेशन. देन यू कैन सी दैट वेरिएबल n has 1 power, that means it is a linear equation. And here in the equation only n is one variable. Okay, so this is called as equation in one variable. आप यहाँ पर देखिए
यहाँ पर इक्वेशन में दो वेरिएबल्स है, देखिए एक्स भी है और वाई भी है. सो दिस इज लीनियर इक्वेशन, बट इट इज नॉट लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल. सो वन वेरिएबल लीनियर इक्वेशन बोलेंगे तो आपको सिर्फ एक ही वेरिएबल मिलेगा. जैसे यहाँ पर देखिए n है, यहाँ पर देखिए x है ना. तो ये एक ही वेरिएबल आपको देखना है. सो दैट इज कॉल्ड एज लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल. नाउ आप एग्जाम्पल देख सकते हो, ये है इक्वल टू 4x प्लस 5 एंड 7. सो दिस है इज कॉल्ड एज, इसको हम इक्वेशन बोलेंगे. ठीक है, दिस इज एन इक्वेशन because the expressions whatever is there is to the left hand side and to the right hand side of the equal to. तो ये जो 4x plus 5 है, ये कौन सा साइड है? This is the left hand side and this 7 is to the right hand side. सो यू कैन सी ये वाला एक्सप्रेशन लेफ्ट हैंड साइड है और ये वाला एक्सप्रेशन राइट हैंड साइड है. सो इक्वल टू इज इन बिटवीन. सो दिस टाइप ऑफ एक्सप्रेशंस आर कॉल्ड एन इक्वेशन. नाउ व्हाट यू कैन सी इज, यहाँ पर जो x है इसमें जो पावर है, तो मैं और एक एग्जांपल आपको देती हूँ. अब देखिए, आप ध्यान दीजिए, ये देखिए 4x प्लस 5 इक्वल टू 7. This you know. Then I have written another example, 4x square plus 5 is equal to 7. Now both these are equation. ये दोनों equation है क्योंकि expression left hand side में है और right hand side में. But this is a linear equation. This is not an linear equation. ये linear equation नहीं है, ये linear equation है. Okay, this is linear equation. Why? दिस इज लीनियर इक्वेशन बिकॉज यहाँ पे देखिए x के ऊपर जो पावर है वो 1 है, लेकिन यहाँ पर देखिए x के ऊपर जो पावर है वो कितना है? 2 है. सो इट इज़ नॉट अ लीनियर इक्वेशन. लीनियर इक्वेशन में हमेशा पावर क्या होना चाहिए? 1 होना चाहिए. लाइक इफ एफ दिस इज लाइक दिस एक्स वाई, लेकिन पावर देखिए हर एक वेरिएबल के ऊपर 1 ही है. लेकिन यहाँ पर आपको देखिए, यहाँ पर एक्स स्क्वायर है, यहाँ पर 1 है, लेकिन फिर भी इस तरफ एक्स स्क्वायर है, इसीलिए ये लीनियर इक्वेशन नहीं है. अब देखिए, मैंने दो एग्जाम्पल ले लिए हैं. तो 4x प्लस 5 इज इक्वल टू 7. दिस इज लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल. In one variable. Why it is one variable? Because you can see the alphabet, एक ही alphabet है, x. Okay, so that is why it is called as linear equation in one variable. Because equation it is, then power is 1, so it is linear equation and it has only one variable, that is x. Now if you look to this, यहाँ पर देखिए, ये आपका equation तो है, लीनियर भी है क्योंकि पावर इनके 1 है, लेकिन here your variables are 2. okay, because x is also there and y is also there. So here the thing is linear equation in 2 variables. This is in 2 variables. सो यहाँ पर 2 वेरिएबल्स है, इसीलिए ये हम कहते हैं लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स. सो हमको जो इस चैप्टर में पढ़ना है वो हमें एक ही वेरिएबल में पढ़ना है, दैट इज लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल. नाउ हियर सम प्रॉपर्टीज ऑफ इक्वेशंस आर देयर दैट यू नीड टू नो. If the same quantity is added to both the sides of equation, the sums are equal. So if anything is added up in the equation, so if x is equal to y, now you can see x is equal to y, so here z is added. तो यहाँ पर दोनों साइड में ऐड किया है, तो the sum are equal. Okay, and then here also if you subtract something, so if you subtract it from both the sides, दोनों साइड में आप subtraction करोगे तो the difference will be same. Then if you want to multiply anything, so you should multiply in both the sides so that the product remains the same. Again for division also the same thing. If you want to divide, then you should
divide both the sides to get the equal division quotients. Okay, so whatever you are doing, इक्वेशन में आपको जिधर भी ऐड करना है या सब्ट्रैक्ट करना है, डिवाइड करना है, मल्टीप्लाई करना है, तो आपको लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों में ही उस चीज़ को करना पड़ेगा. कोई भी ऑपरेशन आप कर रहे हो तो उस चीज़ को दोनों साइड में ही आपको करना है. ठीक है. Now you have transposition of terms of an equation. So a term on any side of the equation can be shifted to other side of the equation by changing its sign. So in equation you have a term called as transposition. Transposition मतलब position में change होना. So as you know that whenever we need to change the position, मतलब हमें हमारा जो इक्वेशन में जो भी टर्म्स है वो यदि लेफ्ट हैंड साइड में है और हमें उसको राइट हैंड साइड में लाना है, तो व्हाट वी डू, वी चेंज द साइन एंड वी टेक इट टू द नेक्स्ट साइड. नाउ आई सी हियर एग्जाम्पल में दिया हुआ है, देखिए x + 5 = 7. ओके, नाउ व्हाट यू वांट टू डू, यू वांट टू शिफ्ट ये जो 5 है यहाँ पर देखिए x + 5 जो है वो लेफ्ट हैंड साइड में है, इक्वल टू के लेफ्ट हैंड साइड में, और ये देखिए ये राइट हैंड साइड में है. तो अब आपको क्या करना है, आपको ये 5 को जो लेफ्ट हैंड साइड में है उसे आपको राइट हैंड साइड में लाना है. तो एज यू नो दैट इफ वी वांट टू ब्रिंग दिस 5 टू योर राइट हैंड साइड, व्हाट वी शुड डू, सी हियर, here it is plus sign. So as we have to bring this to our right hand side, so we need to change the sign. So ये plus का साइन क्या हो जाता है, माइनस हो जाएगा. ठीक है. तो देखिए अब लेफ्ट हैंड साइड में ओनली x is remaining and right hand side में you got 7 - 5. Similarly, if you look for this second example where you have y - 8 on your लेफ्ट हैंड साइड एंड दिस 3 इज ऑन योर राइट हैंड साइड. तो अब देखिए ये 8 को हमें क्या करना है, ये 8 को हमें राइट हैंड साइड में लाना है. सो यू हैव हियर -8. सो एज यू ब्रिंग दिस 8 टू योर राइट हैंड साइड, दिस साइन चेंजेस. यहाँ पे माइनस था लेफ्ट हैंड साइड में, और जब आप इसको राइट हैंड साइड में लाए तो ये साइन आपने चेंज करना है. ठीक है. सो ये बन जाता है 3 + 8. Okay, similarly if you go for this question, here also you have 7m = 15. So what you have to do is you have to take this 7 this side. तो 7 जो है आपके लेफ्ट हैंड साइड में है, और आप यहाँ पर देख पा रहे हो कि 7 × m है. Okay, so whenever multiplication is there, so whenever you are bringing it to the other side, this becomes your division. ठीक है. तो देखिए 15/7 हो गया. ठीक है. अब ये सब में देखिए ये है डिवाइड, n/6 = 4. नाउ यू वांट टू ब्रिंग दिस 6 टू दिस साइड, सो डिवाइड विल बिकम योर मल्टीप्लिकेशन. सो कैसे होता है, जैसे कि आपको यहाँ पे प्लस है कोई भी नंबर, तो उसको आपको दूसरे साइड लाना है तो ऑपोजिट साइन हो जाएगा, माइनस हो जाएगा. यदि सब्ट्रैक्ट साइन है तो ऑपोजिट साइड में उसका प्लस साइन हो जाएगा. इफ इट इज़ मल्टीप्लिकेशन, देन व्हेन यू ब्रिंग इट टू अदर साइड इट बिकम्स डिवीजन, और डिवीजन का क्या हो जाएगा, मल्टीप्लिकेशन. ओके, सो be sure about all these positional changes. So this is called as transposition. So if you want to shift any term to the other side, you have to change its sign. Okay, so this is how you have to go for the transposition of terms. Then you have solution of the equation. Whenever you have equation, you want to satisfy the solution. So यहाँ पर देखिए 3x - 5 = -2 has x = 1. So जब भी आपको वेरिएबल का वैल्यू मिलेगा, what you have to do, you have to verify it. Verify means you have to put that
solution in the equation, and then you have to verify that LHS is equal to RHS. LHS means left hand side is equal to right hand side. If left hand side and right hand side equals, then only the solution whatever you have got is correct. Otherwise your solution is wrong. So this is one of the verification that you need to go for your equations. Now solving linear equation in one variable, that also you have to go for. So let us go for the exercise, then only you will come to know how we can proceed for these questions. Now here you have express each of the following statements in algebraic form. A number when increased by 21 gives 30. So a number, if a number is x, then if it is increased by 21 will give you 30. So let us write the equation. So let us take the number as x. It is increased by 21, that means you have to add 21 and it will give you 30. तो देखिए आपका इक्वेशन बन गया, right, left hand side and right hand side. Okay, so this is how you need to form the algebraic expressions. Then second one, twice of a number when decreased by 9. Twice of a number, twice of a number, the 2 times of a number when decreased. Decrease means minus 9 is equal to, will give you 11. So again you get the expression like this. Now x subtracted from 10 equals 3. So x is subtracted from 10, that means you have to write 10 first and then x, and it will give you 3. So this is how you have the expression. Now 18 divided by x. So 18 divided by x will give you 6. So just see division. 18 एक बड़ा सा मैं यहाँ पर लिखती हूँ, देखिए इस तरह से 18 divided by x is giving you 6. Now 1/4 of a number when added to 2/7 of same number gives 135. So let us see 1/4 of a number, that means 1/4 of a number. So number is x. Then when added, so just put the plus sign, when added to 2/7 of a number gives you 135. Gives you 135. Okay. So this is how you are going to write 1/4 of a number added with 2/7 of a number is equal to 135. Then let us go back to f. F sum is the sum of two consecutive number is 21. Now sum of two consecutive मतलब एक के बाद एक. Suppose first number is 1 and second number will be x plus 1. Okay, so these two are the consecutive numbers which will give you 21. Okay, so let us further go for it. X and x will give you 2x plus 1 is equal to 21. ओके, सो ये कॉन्जिक्यूटिव मतलब एक के बाद एक. तो सपोज 1 है फर्स्ट नंबर, तो सेकेंड नंबर क्या होगा, वही नंबर प्लस 1. जैसे 1 + 1 2 होता है, देन 2 + 1 is 3. दैट इज वाई वी हैव रिटन x + 1. ओके, सो x plus 1 is equal to 21. So it will give you 2x plus 1 is equal to 21. Okay, so this is how you have to form the algebraic expressions. Now you have to write the suitable statements for the following expression. तो यहाँ पर आपको suitable statements लिखने हैं. तो आप देख सक रहे हैं ये जो आपको expression दिया है, ये वाला आपके इस expression के similar है. देखिए थर्ड C का. तो आप कैसे लिख सकते हो इसको, x subtracted from 15 equals 6. इस तरह से लिख सकते हो, x subtracted
फ्रॉम 15 इक्वल्स 6। तो ये आपका स्टेटमेंट हो गया। देन 4x माइनस 4 इज गिविंग यू 76। तो यहाँ पर देखिए ट्वाइस ऑफ नंबर, तो यहाँ पर 4 टाइम्स ऑफ ए नंबर व्हेन डिक्रीज्ड बाय 4 गिव 76। इस तरह से आप लिख सकते हो। तो ये आपके लिए होमवर्क है, आप देखिए किस तरह से आप स्टेटमेंट्स लिख सकते हो। तो ये जो सेकंड क्वेश्चन है, आई एम गिविंग इट एज होमवर्क। नाउ लेट अस गो टू क्वेश्चन नंबर 3. So here you want to solve these questions, okay, and you need to find out the value of the variables. तो यहाँ पर ये questions आपको दिए गए हैं, इसे हम solve करेंगे और जो भी variables है, जैसे यहाँ a है, यहाँ x है, यहाँ एक भी x है, इनको हम value find out करेंगे. Now see the first question where we have to शिफ्ट, isn't it? ट्रांसपोजिशन शुड बी देयर। तो यहाँ पर देखिए मैंने 2a को यहाँ लिख लिया है और उसके बाद ये 6 जो लेफ्ट हैंड साइड में था इसको मैं राइट हैंड साइड में लिख कर जा रही हूँ। सो देखिए इस तरह से, सो दिस बिकम्स योर 2 एंड देन यू कैन सी हियर, यहाँ पर क्या देख पा रहे हैं आप, 2 मल्टीप्लाइड बाई ए है। तो इसका मतलब हम यदि a को यहाँ पर लिखें तो ये मल्टीप्लिकेशन वाला 2 क्या हो जाएगा, नीचे आकर डिवाइड हो जाएगा, ऑपोजिट हो जाएगा, है ना। सो दिस विल गिव यू 1. सो वैल्यू ऑफ a इज 1. Now let us go for the second one. Here you have x is equal to 15. Take this to right hand side, so sign changes. And here you can see x is 18. Okay, now let us come to this question. Here first you need to, यहाँ पर जो मिक्स्ड फ्रैक्शन है इसको हम फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं। तो ये आपको पता है 3 मल्टीप्लाइड बाई 2 इज 6 प्लस 1 इज 7. सो दिस विल गिव यू 7/2. कैसे करते हैं ये आपको पता है ना। 2 मल्टीप्लाइड बाई 3 is 6, 6 plus 1 is 7. So your denominator remains as 2. Then x upon 7, 7/2, ये जो 2 है इसको आप राइट हैंड साइड में लेकर जाइए तो आपको यहाँ पर -2 हो जाएगा. देन गो फॉर LCM, यहाँ पर 2 हो जाएगा, 2 into 1, ये है ना यहाँ पर 1. So 2 multiplied by 1, this will give you minus here 7 minus यहाँ पर आ जाएगा आपका 2 multiplied by 2 is 4. So then go for the next step. Here 3/2. Now let us calculate. क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा आपका। यहाँ पर देखिए 7 into 3/2. Then this x is 21/2. So this is your answer, 21/2. तो यहाँ पे ये सब में सबसे पहले आपको ये मिक्स फ्रैक्शन को सिंपल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है और उसके बाद यू नीड टू प्रोसीड. ओके, सो दिस इज हाउ यू नीड टू टेक आउट योर वैल्यूज ऑफ a. यहाँ पर x, यहाँ पर भी x. नाउ here you have the fraction, you can convert this into mixed fraction. यहाँ पर आप mixed fraction में भी लिख कर सकते हो. कैसे करोगे ये mixed fraction में, आप इसको आप डिवाइड करोगे. देखिए मैं डिवाइड करती हूँ, ये रहा. तो 2 1s are 2, 1, यहाँ पर क्या हो जाता है, यहाँ 0, यहाँ पे 1 हो जाता है ना. फिर you have here 0, then here also you are getting remainder as 1. So your mixed fraction कैसे लिखते हैं हम लोग, देखिए जो quotient है उसको हम बीच में लिखते हैं इस तरह से 10, और फिर रिमाइंडर को ऊपर लिखते हैं. तो ये हो जाएगा आपका, सो देखिए 10 हो गया और फिर यहाँ पर जो रिमाइंडर है वो लिख लिया और जो हमारा यहाँ पर डिवाइज़र लिख लिया है. तो
आप यदि सिंपल फ्रैक्शन में लिखोगे तो आपका आंसर ये आएगा, आप मिक्स फ्रैक्शन में लिखोगे तो आपका आंसर ये आएगा। तो मिक्स फ्रैक्शन में कैसे करना है आपको पता चला है ना, 2 1s are 2, फिर ये 1 को आप नीचे लाइए, फिर 2 0s are 0 and you are getting 1. So this is how you have to go for your mixed fraction. Okay. Now see the D and the E part. So here y by 5 plus 5 is equal to 5. So what I did, I have taken this 5 to your right hand side. So the sign changes and 5 minus 5. So it will give you 0 and anything multiplied by 0 will give you 0. तो यहाँ पर ये जो 5 है इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो भी हमको क्या मिलेगा, 0. नाउ कंसिडर दिस वन. अब क्या करेंगे, हम इस 10 को इस तरफ लेके जाएंगे, ठीक है. और यहाँ पर देखिए ये माइनस एक्स बाई 3 है, इसलिए यहाँ पर माइनस एक्स बाई 3 एज इट इज रख दिया है हमने. फिर 30 माइनस 10 यू नो इट इज़ 20. नाउ एज यू नो ये डिवाइड है तो ये 3 इस तरफ आएगा तो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा. So 20 into minus 3, this minus is here. So this will give you 60. Now if you take this x to this side, it will give you positive and this is to this side will give you minus 60. Okay. So this is your E1. तो यहाँ पर ये जो है ना माइनस एक्स इज इक्वल टू 60, हमने क्या किया, एक्स को इस तरफ ला दिया तो वो एक्स हो गया और माइनस 60 को हमने इस तरफ ला दिया तो माइनस 60 हो गया. ओके. Now see the sums over here. So this is your f, cross multiply it, then you need to go for division. G minus 28 upon 7. So here minus sign is there, that is why you have 4 here. Next one is minus 48. So minus 48 here, minus 4 has come down. So this minus and this minus gets cancelled out. So you are getting x is equal to 12. तो ये जो दो माइनस है यहाँ पर ये कैंसिल करना है आपको. ओके. नाउ यू कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज I1 वेर यू हैव 4x plus 1 plus 2x is equal to 3. Now what you need to do, you need to multiply. 4 को x के साथ मल्टीप्लाई कीजिए, फिर 4 को 1 के साथ मल्टीप्लाई कीजिए. सो देखिए 4 को x के साथ मल्टीप्लाई करने से क्या मिलता है आपको, 4x. 4 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा आपको, 4. देन दिस 2x एंड दिस 3. सो ब्रैकेट इज रिमूव्ड. अब देखिए लाइक टर्म्स 4x और 2x को हमने साथ में लिख लिया है तो हमको 6x देता है, प्लस 4 इज इक्वल टू 3. Now bring this 4 to your right hand side. So as this is plus, minus हो गया तो this will be your minus 1. Now 6x is equal to minus 1. Now bring this 6 down. ये मल्टीप्लाई है इसलिए डिवाइड करना है आपको. सो आपका जो भी आंसर है वो क्या आ गया, x is equal to minus 1 by 6. Now see J part, where you have 5 1 minus x is equal to 3x minus 10. So 5 you have to multiply with 1, then it will give you 5. Then 5 into x will give you minus 5x. Then this one remains as it is. Now what you need to do, अब क्या करना है आपको, यहाँ पर देखिए x टर्म है और ये साइड राइट हैंड साइड भी आपको एक्स टर्म मिल रहा है. तो आप क्या करोगे, यहाँ जो आपको राइट हैंड साइड का एक्स टर्म है उसको आप लेफ्ट हैंड साइड में लेकर आओगे. तो आप देख सक रहे हो यहाँ पे प्लस 3x था, मैंने इसको लेफ्ट साइड में लेके आई हूँ इसीलिए यहाँ पर माइनस 3x लिख दिया. अब क्या करूँगी, अब ये जो 5 है ये जो लेफ्ट हैंड साइड में था इसको मैं राइट हैंड साइड में लेकर आ रही हूँ. तो आप देख सक रहे हो यहाँ पे माइनस 10 ऑलरेडी था जो राइट साइड में, अब इसको मैं राइट साइड में लेके आ रही हूँ. सो दैट बिकम्स योर माइनस 5. सो इस तरह से हमें लाइक टर्म्स को एक साथ लिखना है, ठीक है. तो इक्वल टू के इस तरफ एक एक्स टर्म था, इस तरफ एक्स टर्म था, तो इसलिए हमने इन दोनों को साथ में लिखा है सो दैट इट बिकम्स ईजी.
Now -5 -3 gives you -8x, and -10 -5 will give you -15. So your x is -15 by 8. Now up and down you have minus, so you can cancel this signs. ये साइन आप कैंसिल कर सकते हो. कैंसिल करने से आपको क्या मिल जाएगा यहाँ पर 15/8. ओके. नाउ इफ़ यू वांट टू राइट इन मिक्स्ड फ्रैक्शन, इसे आप मिक्स्ड फ्रैक्शन में लिख सकते हो. तो किस तरह से लिखोगे आप? देखिए 8 1 जा 8 and you have 7 down, so 1. How you will write the mixed fraction? Mixed fraction, first you have to write the quotient, that is 1, then your remainder 7/8. तो इस तरह से आप मिक्स्ड फ्रैक्शन को लिख सकते हो, और आप इस तरह के भी आंसर को लिखोगे तो भी राइट होगा. So in your textbook the answer is given in the form of mixed fraction, that is why I have shown you. Otherwise if you keep it like this it will do. Then you go for the next problem. 10 2y minus 2 is equal to 3y minus 3. Again you need to multiply. Multiply करो 10 into 2y को और 10 into 2 को. ठीक है. ये माइनस साइन देखिए यहाँ पर लिख दिया है माइनस साइन. इज इक्वल टू 3y minus 3. Now 10 multiplied by 2y gives you 20y minus 20 is equal to 3y minus 3. Now what is again you have to do is you have to take the like terms together. तो देखिए ये 20y और यहाँ पर ये 3y, तो मैंने देखिए 3y को लेफ्ट हैंड साइड में लेकर आ गई हूँ, तो इसका साइन चेंज हो गया है. सो दिस बिकम्स -3y and this 20 I have taken to right hand side, so this has become +20. Okay, so 17y is equal to 17 and y is 17/17 is nothing but 1. Okay, तो ये दो कैंसिल हो जाएगा आपका. So and this will give you 1. Now see the next problem. 4z minus 2 plus 3. 2 minus z is equal to 8. 1 minus z. So first do the multiplication. 4 into z is 4z. Then minus 8. Then 3 2s are 6. Minus 3z. Then 8 minus 8z. Now bring all the z. यहाँ पर जो ये जो लेफ्ट हैंड साइड में जो z's है उसको आप साथ में ले लीजिए. 4z minus 3z minus 8 plus 6. तो यहाँ पर आपका साइन चेंज नहीं होगा क्योंकि ये सब एक ही तरफ है, लेफ्ट हैंड साइड तरफ ही है. खाली आपका जो पोजीशन है वो चेंज हो रहा है यहाँ पर. तो यहाँ पर आप साइन नहीं चेंज करोगे क्योंकि आप इक्वल टू के उस तरफ नहीं लेके जा रहे, आप इक्वल टू वही तरफ है ना. तो 4z minus 3z is z and then minus 2. Then here 8 minus 8z. अब आप क्या करोगे? अब आप z को जो लेकर आओगे टुगेदर, अब आपका साइन चेंज होगा क्योंकि आप इक्वल टू के लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को में नंबर्स लेकर जा रहे हो. सो z plus 8z इक्वल टू 8 plus 2. सो ये जो माइनस था ये अब प्लस हो गया है. Now this will give you 9z is equal to 10. Z is equal to 10/9. Again you can go for mixed fraction. So here mixed fraction will be again your 1/9. तो ये आपका mixed fraction हो गया. तो if answer is in this simple fraction will do. आप mixed fraction में भी लिख सकते हो क्योंकि बुक में आपका mixed fraction में आंसर दिया गया है. Now see the last two sums, that is m and n. So m you have 6z plus 3 plus 4. 2 minus z is equal to 5z. Now just open the bracket. So 6 multiplied by z 6z plus 6 into 3 is 18. You have 4 multiplied by 2 is 8 and 4 multiplied by z is minus 4z is equal to 5z. Now यहाँ पर ये स्टेप में क्या हमको ये z को सब टुगेदर लेकर आइए और ये जो आपके कॉन्स्टेंट्स है उसको साथ लेकर आइए, लेकिन साइन आपका वही रहेगा क्योंकि आप इक्वल टू के लेफ्ट हैंड साइड ही जो भी कर रहे हो लेफ्ट हैंड साइड ही हैं आप. तो 6z minus 4z will give you 2z. Then this will give you 26. Then equal to 5z. Now you have to bring the z to your लेफ्ट हैंड साइड. तो ये 5z को आपको लेफ्ट हैंड साइड लेकर आइए और यहाँ पे जो कांस्टेंट टर्म था इसको आपको राइट हैंड साइड लेकर आना है, तब आपका साइन चेंज हो जाएगा.
तो here you have minus 3z is equal to minus 26. So z is equal to minus 26 upon minus 3. So minus minus gets cancelled out. So you are getting 26 upon 3 and that can be written in a mixed fraction like this. Divide कीजिए 26 3 और 8 3 8 जा 24. So your quotient is 8 and your remainder is 2. Okay, now let us move to next question. Here also you have to take out the brackets. So minus 5x और यहाँ पर -5 मल्टीप्लाइड बाई -1 क्या हो जाता है +5. फिर -2 इंटू एक्स -10. ओके, नाउ 3x + 15. Now again bring all the like terms together. So साइन नहीं चेंज होगा क्योंकि आप इक्वल टू के उसी लेफ्ट हैंड साइड ही कर रहे हैं जो भी है. सो -7x यहाँ पर हो गया और -5 हो गया. देन you have right hand side 3x plus 15. Now bring this x term to your left hand side and this constant to your right hand side. तो अब आपका साइन चेंज हो जाएगा. यहाँ पे प्लस था तो यहाँ माइनस हो जाएगा, यहाँ पे माइनस था तो यहाँ प्लस हो जाएगा. Now minus 10x is equal to 20. Now minus x is equal to 20 upon 10. So that will give you 2. So x will be minus 2. So with this we complete off with third question, that is solve. Now in your fourth question you need to solve the equation and then you need to verify it. तो solve करना तो आपको आ जाएगा क्योंकि देखिए यहाँ पर 3z plus 2 is equal to 6. So what you want to do is 3 multiplied by z is 3z and 3 multiplied by 2 is 6 is equal to 6. Now 3z, then take this 6 to your right hand side and 6 minus 6 gives you 0 and z will be 0 upon 3 and that will give you again 0. Now for verification what you need to do is substitute. मैंने क्या लिखा है देखिए, substitute z equal to 0 in left hand side of your equation. तो आपका इक्वेशन किधर है, ये रहा आपका इक्वेशन. तो आपका जो लेफ्ट हैंड साइड है वो आप लिख लीजिए. तो लेफ्ट हैंड साइड आपका क्या है, लेफ्ट हैंड साइड बोलेंगे तो ये साइड 3z plus 2. सो सी z plus 2 ये आपका लेफ्ट हैंड साइड है. ठीक है, अब क्या करना है, अब z के बदले आपको 0 सब्सटीट्यूट करना है. सो लेट अस डू दैट. यहाँ पर 0 और यहाँ पर 2 लिख दिया हमने. तो अब क्या हो गया, 3 मल्टीप्लाइड बाई 0 इज 0 और यहाँ पर क्या हो गया, 3 मल्टीप्लाइड बाई 2 इज 6. नाउ इन ऑल वी गेट 6 एंड विच इज इक्वल टू राइट हैंड साइड. तो ये देखिए राइट हैंड साइड में भी हमारा 6 था, क्वेश्चन में देखिए है ना, राइट हैंड साइड 6 था. तो विच इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, दैट मीन्स योर solution is correct. तो यहाँ लिखना है therefore the solution z is equal to 0 is correct. So this is how you need to go for verification. क्या करना है, जो भी वैल्यू आपको मिल रहा है उसको आपको इक्वेशन में रखना है. तो लेफ्ट हैंड साइड आप इक्वेशन का लोगे, आप इसको रखोगे वैल्यू को और देन यू हैव टू कैलकुलेट एंड देन यू हैव टू सी वेदर इट इज इक्वल टू राइट हैंड साइड और नॉट. देन you are going to write the solution z is equal to 0 is correct. Okay, so we'll proceed for the next one. Now see the second sum, 2x plus 5 is equal to 10. So again you have to go for the removal of bracket and you are getting 2x plus 10 is equal to 10. Bring this 10 to your right hand side and you are getting 10 minus 10 as 0. So your solution for x is 0. Now for verification you need to substitute this value to the left hand side. तो आप देखिए ये वाला हमने ले लिया है. So
as we have substituted x is equal to 0, we are getting 10 as our answer, which equals to right hand side. Therefore the solution x is equal to 0 is correct. So this is the second question we have done. Now students, let us see how this sums verification we do. So this is the way you have to solve the sum that you know already, isn't it? तो यहाँ पर देखिए, आपको इस ब्रैकेट को रिमूव करने के लिए you have to go for 9z minus 27, then a is equal to 8z. Okay, now bring this like term, that is z terms together. So as we have taken the z terms together, we get z is equal to 27. अब इसके वेरिफिकेशन में देखिए हम क्या करते हैं, क्योंकि ये सम में देखो दोनों साइड z है ना, तो हमको क्या करना पड़ेगा, ये पूरे सम को ही, पूरे इक्वेशन को हमको लेना पड़ेगा, और जहाँ जहाँ z है वे देयर यू नीड टू पुट दिस नंबर. तो आप देखिए यहाँ पर मैंने z के साइड में मैंने नंबर डाल दिया है 27, यहाँ भी 27 डाल दिया है. नाउ एज यू कैन गो फॉर 9 मल्टीप्लाइड बाई 27, इट इज़ 243 and 9 3s are 27 is equal to 216. Now you can see यहाँ पर देखिए लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों तरफ आपको 216 you are getting. That means left hand side is equal to right hand side, and therefore z is equal to 27. Okay, so like this you have to solve whenever you have both the वेरिएबल टर्म्स इन बोथ द साइड्स. तो पहले जो दो सम थे उसमें कैसा था, आपका राइट हैंड साइड में सिर्फ नंबर थे, बट यहाँ पर आपके क्या है, यहाँ पे वेरिएबल टर्म है, इसीलिए हमें जब वेरिफिकेशन करते हैं तो हमें इस तरह से वेरिफिकेशन करना है. दोनों साइड हमें z का वैल्यू पुट करना है, और उसके बाद हमें देखना है कि दोनों साइड में सेम इक्वल वैल्यू आ रहे हैं या नहीं. Okay, so this is how we go for this type of questions. Now your D is similar type of question, so I think you can go it for homework. Similarly you have E भी वैसे उसी तरह का है, तो आप D and E you have to go for homework. Then I will go for the F problem. Now let us come to F question, where you have left hand side and right hand side like this. So let us just solve. So 5 upon 2 multiplied by x is 5 upon 12x plus 5 upon 12 into 5. We did that. Then your right hand side is 5 upon 6. Then here again 5 upon 12x plus 5 multiplied by 5 is 25 upon 12 is equal to 5 upon 6. Now what we will do is we will keep 5 upon 12x on your left hand side, and we will take this constant term to your right hand side. Now as we have taken it right hand side, we have to change the sign. So this becomes minus 25 upon 12. So 5 upon 12x is equal to 10 minus 25 upon 12. LCM कीजिए इसका, तो you will get 12, and 10 minus 25 will give you minus 15 upon 12. Now x को आपको रखना है, तो ये जो टर्म है ये हमने ले लिया है, और इसको हमने रेसिप्रोकल कर दिया. रेसिप्रोकल मीन्स ऑपोजिट. देखिए 12 अपॉन 5 हो गया है, ठीक है. तो minus 15 upon 12 this term and this reciprocal. Okay, so now what you are getting, x is equal to, यहाँ पर देखिए 12 और 12 कैंसिल होता है, so just cancel of 12 and 12, and then 5 3s are 15. It's a 15. So you get x is equal to minus 3. So for verification, put x is equal to minus 3. So as you know, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर राइट हैंड साइड में आपका कांस्टेंट टर्म है, वेरिएबल नहीं है, तो आप क्या करोगे, सिर्फ लेफ्ट हैंड साइड का एक्सप्रेशन लोगे, और आप क्या करोगे, यहाँ पर जो x है उसके बदले आपने -3 लिख लिया है, और इस तरह से आप इसे लिख लोगे, ठीक है. तो 5 upon 12 -3 + 5. सो अब आप इसे सॉल्व कीजिए. -3 + 5 क्या होता है, 2 होता है. देन यू हैव टू मल्टीप्लाई दिस. सो
here 2 1 are 2, 2 6 are 12. So your answer comes as 5 upon 6 and which is equal to your right hand side. Right hand side देखिए 5.6 है, यहाँ भी आपका 5 and 6 है. So therefore x is equal to 3 minus 3 is correct solution. ठीक है, करेक्ट सोल्यूशन. सो इस तरह से आपने f प्रॉब्लम को सॉल्व करना है. अभी आपका जो जी प्रॉब्लम है, देखिए यहाँ पे मिक्स्ड फ्रैक्शन दिया गया है. तो आप क्या करोगे, फर्स्ट ये मिक्स्ड फ्रैक्शन को सिंपल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करोगे. सो 3 2 are 6 and 7 and then this becomes like this. Now what you will do, minus 2 by 3x is equal to, take this thing minus 7 by 3 this side and then you solve it. So 4 minus 3, so again you have minus 3 upon 3. So your minus 2 by 3x is equal to, here it comes as minus 1. Therefore x is equal to minus 1 multiplied by 3 minus 2, isn't it? So this here you will have, ये माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा आपका. तो यहाँ पर आपको क्या मिलेगा, x इज इक्वल टू 3 अपॉन 2. सो देखिए x इज इक्वल टू 3 अपॉन 2. तो अब आप क्या करोगे, वेरिफिकेशन करोगे. सो वेरिफिकेशन करने के लिए आप कहाँ पर सॉल्व करोगे, यहाँ पर देखिए. सो देखिए हमने ये स्टेप लिख लिया है क्योंकि यहाँ मिक्स्ड फ्रैक्शन था, इसलिए हमने ये स्टेप लिख लिया है. नाउ वी शुड गेट 4 अपॉन 3. ओके, सो लेट अस पुट x एज 3 अपॉन 2. x का वैल्यू हमारा 3 अपॉन 2 आया था और फिर यहाँ पर इस तरह से. तो ये देखिए ये 3 3 कैंसिल हो गया, यहाँ भी 2 2 कैंसिल हो गया एंड यू आर गेटिंग minus 1 plus 7 by 3. Now as you go for LCM, you will get like this. So this will give you 4 upon 3 which is equal to your right hand side. So x is equal to 3 by 2 is correct solution. Correct solution. So you can see here x is equal to 3 by 2 is correct solution. Now your x sum, you can do it as homework. I will just show you a small how you can go for the sum, and for I also I will show you how you can go for the sum. So you can see the sum how I have solved it. So यहाँ पर देखिए, फिर यहाँ पर आकर आपका जो सम होगा, यहाँ पर देखिए 5 4s are 20. ओके, सो दिस विल कम एज 13 by 28. तो वेरिफिकेशन में आप इसको लेफ्ट हैंड साइड में डालकर देखिए, आपको 1/4 राइट हैंड साइड के साथ उसका इक्वालिटी आना चाहिए. ठीक है, सो योर आंसर शुड x value is 13 upon 28. So just put this in verification and just see whether your left hand side and right hand side gets equal of. Now see the last sum where you have to go for cross multiplication. तो देखिए मैंने इसको इसके साथ क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया और इसको इसके साथ क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया है. Then you have to solve it and then go for the calculations. So here you have 285 upon 25. Now see, I have solved this problem. So here y is equal to 57 upon 5 and as we have put it on the left hand side, ये जो left hand side में देखिए y के बदले मैंने 57 upon 5 and minus 10 divided by 5.
So LCM if you are taking, then you are getting 57 minus 50 upon 5, and that will give you 7 by 5 into 1 by 5, and that is 7 upon 25, which is equal to your right hand side. So whatever solution you have got for y, that is correct. So with this we complete off with exercise 13.1. Thank you.